Morning everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. Now before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Morning everyone, morning. कैसे भाई सब लोग? सब sorted? सब बढ़िया? चलिए, so sorry for the delay, है ना? All good? Audible and visible? चलिए ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. अब अभी तक हम संडेज को क्या कर रहे थे कि हम करंट लीगल अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे या हम सॉल्व कर रहे थे, राइट? बट आज हम बेसिकली स्टैटिक लॉज के पैसेजेस को प्रैक्टिस करेंगे एंड देयर आर 5 पैसेजेस और 5 टॉपिक्स दैट विल बी सॉल्विंग टुडे. तो आज जो हमारे 5 पैसेजेस होंगे स्टैटिक लॉ के, दैट विल इन्वॉल्व 3 पैसेजेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से. फर्स्ट इज रिलेटेड टू पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. The second topic is related to right to religion. The third topic is related to freedom of profession. And जो next 2 topics होंगे हमारे, that will be from the law of torts. तो law of torts से आज हम 2 passages solve करेंगे. One is about negligence and the other one is related to defense of VNFI. अब ये जो passages हम आज solve करेंगे, practice तो होगी, but बाद में मैं इसकी PDF आपको ज़रूर provide कर दूंगा उस Telegram group पे. But along with that, once you are done with these things, now use these passages as clearing your concept material as well as reading material as well. इनको आप रीडिंग पर्पसेस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए भी इनको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए या कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए भी इन द मंथ ऑफ नवंबर यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, क्लियर? चलिए फिर शुरू करें भाई. हाँ जी, शैल वी स्टार्ट? Chalo. All right. So let's start with our session. And the first passage which we have is related to part 1 of the Constitution of India. Chalo. So passage is visible, everyone. Passage clearly सबको दिख रहा है, right? Chalo. Start solving the passage. Done, everyone? Done? डन भाई, पढ़ लिया सबने? डन? चलो, ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
डन, पढ़ लिया भाई सबने? डन विद द पैसेज? चलिए, ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, है ना? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व द फर्स्ट वन। हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1? फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है भाई? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? चलो देखो, so the question was, which of the following statements correctly reflects the constitutional powers and limitations of the Indian Parliament concerning the alteration of state boundaries? अब यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है हमारा, देखो, ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. इट सेज दैट पार्लियामेंट कैन ऑल्टर अ स्टेट बाउंड्री ओनली इफ द स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूव्स द चेंजेस विद इन अ सेट टाइम फ्रेम. ऐसा नहीं है. The bill is sent to the or sent for getting the opinion of the state legislature. But state legislature का जो भी opinion होगा, that is not binding on the Parliament of India या on the President of India. And therefore ये कहना कि Parliament सिर्फ तभी alter कर सकती है when the state legislature approves it. So that will not be the correct answer. And therefore the correct answer over here was option B, that Indian Parliament may alter the state boundaries without binding itself to the state legislature's opinion even if submitted. कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना ओपिनियन सबमिट किया भी है तब भी भाई वो बाइंडिंग नहीं होता है पार्लियामेंट के ऊपर. एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी. ठीक है, क्लियर? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 2? चलो देखो, अब जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, द क्वेश्चन वाज, स्टेट्स एक्स एंड वाई वर बोथ पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी but represented distinct culture and religious identities adhering to completely different faiths. This fundamental divergence led to increased tensions, making it difficult for the two states to coexist harmoniously within a single national framework. As a result of this, the citizens of State X, feeling a strong connection to their cultural and religious roots, collectively decided to pursue separation from India in favor of joining country A, which follows the same faith and shares similar values. Now, considering these circumstances, do you think that such an arrangement is feasible? So the answer is no. When Article 1 of the Constitution of India declares that India is going to be a union of states, that in itself means कि किसी भी state के पास ये option नहीं होगा कि वो country से अलग हो पाए, right? And therefore correct answer over here was option D, that according to the Constitution, no state has authority to withdraw from Indian territory under any circumstances. करेक्ट करेक्ट भाई, सब लोगों का यहां पर करेक्ट ही आंसर आया था. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो.
हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन द थर्ड वन? थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है भाई? चलो देखो. So the question was, states A and B were both part of the Indian territory, with state A predominantly comprising individuals from religions P and Q, while state B consisted of people from religion Q and R. Due to ongoing religious conflicts that pose significant social challenges, the parliament made the decision to separate the states into three distinct regions based on their religious demographics. Consequently, the two states were collectively divided and renamed as P, Q, and R. Comment. अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का पार पार्लियामेंट को गिवन है, right? And therefore, straight away, the correct answer over here was option C, that the constitution grants the parliament the authority to alter the state boundaries and rename the states as required. Chaliye, let's move to the next one. Fourth question solve karo. हाँ जी, what's the correct answer in fourth? देखो, the government made the decision to reorganize states Y and Z, merging them into a single entity due to their religious and social similarities. To facilitate this process, the state legislature of both states were asked to provide their opinion on the proposed merger. However, both legislature expressed their refusal to proceed with the merger and communicated their objections. Despite this refusal, the president recommends the merger of the two states. Given these circumstances, do you think that the president has the authority to override the will of the merging states? अब इसमें आप में से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने डी मार्क किया, बट द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी बेटा. आर्टिकल 2 की जब हम बात करते हैं ना, तो आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली रिलेटेड टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. On the other hand, Article 3 is basically related to the reorganization of the existing states. ये जितना पोर्शन यहाँ पे गिवन था ना, this was actually related to Article 3 and not Article 2. Article 2 तब यूटिलाइज होता है जब हम किसी फॉरेन टेरिटरी को अपनी कंट्री का पार्ट बनाएं. तो जैसे गोवा को 1961 में हमने अपने कंट्री का पार्ट बनाया, वहां पर आर्टिकल 2 यूटिलाइज हुआ. बट जैसे अभी जब जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया, तो वहां पर आर्टिकल 3 यूटिलाइज होता है. एंड देयरफॉर फोर्थ क्वेश्चन में करेक्ट आंसर वाज नॉट ऑप्शन डी. ऑप्शन डी वहां पर करेक्ट आंसर नहीं था. द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी ओवर देयर, दैट इनवाइटिंग द स्टेट्स ओपिनियन इज merely a procedural formality and the president is not obligated to act on the feedback. ठीक है, clear? So the correct answer over here was actually option B and not D. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. ऑप्शंस इसके नेक्स्ट स्लाइड पे. ठीक है, पहले स्टेटमेंट रीड कर लो, देन विल मूव टू द ऑप्शंस.
डन, पढ़ लिया सबने? डन? डन, चलो, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्या करेक्ट आंसर है भाई? ए, बी, सी और डी? अच्छा, आपने ऑप्शन के साथ ना अपना नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी बताना, ठीक है? वट एवर योर ऑप्शन इज, डू राइट द नंबर ऑफ द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू. हाँ जी, डन, ठीक है, चलो देखो, लेट्स लुक एट दिस थिंग. So K was a union territory within the territorial boundaries of India. After thorough consideration and deliberation, the parliament decided to alter the boundaries of K territory. However, this decision was made unilaterally without seeking the opinion of the state legislature. Now, given these circumstances, do you think that such actions by the parliament are constitutionally permissible? अब यहाँ पर किस पर्टिकुलर टेरिटरी को वो रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? द टेरिटरी विच इज बीइंग रीऑर्गेनाइज्ड ओवर हेयर is a union territory. Yes or no? The territory which is being reorganized over here is actually union territory. By union territory के case में there is no requirement to obtain the opinion of the concerned legislature. ठीक है? Union territory के case में there is no requirement to obtain the opinion of the concerned legislature. कंसर्न लेजिस्लेचर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट सिर्फ स्टेट्स के केस में होती है. बट यहां पर जब वो जिस टेरिटरी को एक्चुअली रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वाज अ यूटी ना, वो तो यूनियन टेरिटरी थी. एंड देयरफॉर ओनली वन स्टेटमेंट वाज करेक्ट ओवर हियर, व्हिच वाज स्टेटमेंट नंबर 3, दैट द पार्लियामेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू सबमिट द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन टेरिटरी फॉर द अप्रूवल. ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट था एंड दैट वाज स्टेटमेंट नंबर 3. ठीक है, क्लियर? चलिए, ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द सेकेंड पैसेज इज बेस्ड ऑन राइट टू रिलीजन. राइट टू रिलीजन से रिलेटेड हमारा सेकेंड पैसेज है. पैसेज को आप लोग रीड करना स्टार्ट करो. वंस यू आर डन विद दिस स्लाइड, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, विल मूव टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, चलिए, start reading the passage. Done, everyone? Chalo, let's move to the next one.
डन, पढ़ लिया सबने? डन, चल, ऑल राइट. Passage is clear, everyone. Passage was basically about our right to religion, जहाँ पर उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी. ठीक है, चलिए तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करो. सॉल्व द सिक्स्थ वन. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ? चलो, let's see the question. So the question was, चलो देखो, question was, which of the following statements best encapsulates the balance the Indian Constitution seeks to maintain regarding the right to religion? अब यहाँ पर प्राइमरली आप लोगों ने दो ऑप्शंस मार्क करे हैं, 6C एंड D. देखो डी क्या कह रहा है, इंडिविजुअल्स इन इंडिया हैव द अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस with the state holding no regulatory authority over religious institution. This is not correct. Unrestricted right थोड़ी ना आपका right to religion, स्टेट उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. मोरओवर स्टेट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने की भी पावर है. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी, that religious institutions can receive state regulation for administrative purposes, but religious practices cannot be curtailed without just cause. ठीक है, so the correct answer over here was option C. चलिए भाई, let's move to the next one. सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व करो. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्या करेक्ट आंसर है भाई? Correct, correct, correct. So the question was that a religious organization in India called Supreme Faith was accused of encouraging people to convert to its religion for exchange of money. The organization claims that it has the right to promote its religion under Article 25 of the Indian Constitution. However, the local authorities argue that offering money for conversions is not allowed under Article 25. Now, what do you think about this conflict between the organization and the authorities? तो आपके पास you have a right to propagate your religion, but even any kind of induced conversion is also not allowed by the Constitution of India, because that in itself violates the freedom of religion of the other person. And therefore, the correct answer over here was option B, that forced or induced conversions are not allowed under the guise of freedom of religion as stipulated in Article 25. ठीक है, चलिए भाई, let's move to the next one. एथ क्वेश्चन सॉल्व करिए. नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. यहां पर स्टेटमेंट गिवन है, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे ऑप्शन है. ठीक है,
डन? पढ़ लिया सबने? डन? चलो भाई, let's move to the options then. What's the correct answer? हाँ जी, what's the correct answer भाई? चलो देखो, so the correct answer is, चलो देखो, क्वेश्चन क्या था? अ मॉस्क इन अ रेसिडेंशियल एरिया इंक्रीज द ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स प्रेयर कॉल्स which disturbed the neighbors. They complained that the loud calls disrupted the peace in the neighborhood. Meanwhile, the mosque officials argued that they have the right to practice their religion as guaranteed by Article 25 of the Indian Constitution. This situation created a conflict between the mosque's religious practices and the neighbors' right to a quiet environment. What do you think should happen in this situation? अब इस situation में exactly किया क्या जाएगा? So as prayer calls are considered as essential religious practice in Islam, no restriction should be imposed upon them. This is incorrect. कि भाई restrictions तो impose किए जा सकते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर यूटिलाइज करना इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन, राइट? स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि as mosque is located in residential area, it must comply with the applicable restrictions. Again a generic statement, but फिर भी करेक्ट हो सकता है शायद. फोर्थ कह रहा है द मॉस्क होल्ड्स अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स, ये तो इनकरेक्ट हो गया. मतलब दो स्टेटमेंट्स हमारे पास एलिमिनेट करने के बाद बचते हैं, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3. अब 2 एंड 3 से रिलेटेड हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? अब अगर इसमें चूज करना होगा कि 2 करेक्ट है या 3 करेक्ट है, क्योंकि ए और बी तो हम आउटराइटली हटा देंगे, राइट? अब देखो आप ये चीज कि आपके पास पैसेज में से ज्यादा बेहतर रीजनिंग किस ऑप्शन में गिवन है, किस स्टेटमेंट में गिवन है. तो दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2, because it says that regulating the volume of prayer calls is suggested to maintain public order while not infringing on the religious rights. A passage based reasoning, and therefore the correct answer over here was only 2 statement, or statement 2 is correct and not option D. ठीक है? क्लियर? क्लियर? चलिए, सो इस पैसेज में हमारे पास 3 ही क्वेश्चंस थे. Now let's move to the next passage, and the next passage is related to right to carry on any that is the freedom of profession, trade or business given by Article 19 of the Constitution of India. ठीक है? चलिए फिर थर्ड पैसेज रीड करना स्टार्ट करो. Done? Everyone? Done? चलिए, all right. So let's move to the next one. नेक्स्ट स्लाइड रीड करते हैं.
Done? Everyone? Done? पढ़ लिया passage? Done? चलो. Again, the passage was basically about the generic information related to Article 19 of the Constitution. यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को यहाँ पर डिस्कस किया गया. क्या है, किसको दिया जाता है, किसके पास अवेलेबल है, किसके अगेंस्ट एनफोर्सिबल है, एंड व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच द स्टेट कैन वेरी वेल रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट योर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. ठीक है, चलिए, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन अब इसका आप सॉल्व करो. सॉल्व द 9th वन. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 9th? क्या करेक्ट आंसर है भाई? Correct. So the question was that which of the following options best reflects the limitations on the right to practice any profession under Article 19(1)(g) of the Constitution of India. So citizens may claim the right to pursue any occupation including those restricted for public safety. ऐसा नहीं है. The right to trade and business under Article 19(1)(g) is absolute. This is also not correct. Individuals have the right to seek employment or pursue any business without limitations. ऐसा भी नहीं है. And therefore correct answer over here was option C, that citizens are permitted to carry on any lawful occupation, but the state may impose restrictions for public interest, professional qualifications, or through state monopolies. ठीक है? So the correct answer over here was option C. चलिए भाई, let's move to the next one. 10th question solve करो. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 10th? चलो देखो, हमेशा कोशिश करो कि जब तुम्हें लगेगा ना कि पैसेज में मुझे कोई एक आंसर करना है, मुझे दो अपने लिए टेंटेटिव आंसर्स दिख रहे हैं, बट ऑलवेज ट्राई टू स्टिक टू द टेंटेटिव आंसर विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द पैसेज ओनली. ठीक है, जैसे यहाँ पर सी बहुत एक टेम्पटिंग ऑप्शन था एंड बहुत सारे लोगों ने सी मार्क भी किया है यहाँ पर, बट क्या सी को आप पैसेज में से डिराइव कर सकते हो? हमेशा किसी भी ऑप्शन को चूज करने के से पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा करो. वो जो यस यस वाली प्रॉब्लम तुम लोगों की होती है ना, वो यस यस वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है, that always stick to the option which can be derived from the passage information only. अब यहाँ पर अगर हम देखें, so the question was that a registered environmental company or consultancy firm called Z wanted to expand into hazardous waste management in a densely populated area. However, the local government had set strict rules on waste management due to health risk to the public. In the light of these restrictions, the company argued it had the right to expand under Article 19 of the Indian Constitution, which allowed citizens to pursue any profession or business. Comment. अब A कह रहा है as rights granted under Article 19 are absolute, इसे हटा दो. D कह रहा है since every company has the right to free trade without governmental interference, इसे भी हटा दो. ठीक है, अब बचता है हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. सी कह रहा है कि as companies that intends to operate in a densely populated area, it must deposit funds with the government to cover any future potential accident.
क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पैसेज ने दी कि भाई आप फंड्स डिपॉजिट करके, एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट करके उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो? ऐसा तो कुछ पैसेज ने हमसे कहा नहीं। तो पैसेज के रिस्पेक्ट में हमारे पास फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बचता है, दैट इज ऑप्शन बी, दैट कंपनी Z कैन ओनली कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इफ इट adheres टू द लोकल environmental standards in place. क्योंकि environmental laws were also mentioned as a ground of reasonable restriction over there, which are primarily imposed by the state in public interest. ठीक है? So the correct answer over here was option B. Clear? Clear? Chali. All right. Let's move to the next one. 11th question solve करो. हाँ जी. चलो देखो. So we have A, we have B, we have C. The correct answer over here is primarily C. ठीक है? C is the correct answer. देखो क्वेश्चन क्या है कि a religious organization known as Q sought to establish a chain of healthcare clinics in India, asserting its right to create and operate these facilities. However, this claim was contested by a company named X, which argued that Q was not a registered company and therefore did not possess the fundamental right to freedom of trade under Article 19 of the Indian Constitution. Comment. अब यहाँ पर आप में से बहुत लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया कि क्योंकि पब्लिक वेलफेयर की एक्टिविटी है, इस वजह से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम अलाउ करेंगे फॉर कैरिंग देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड. जब आप पैसेज को देखोगे, ठीक है, जब आप पैसेज को देखोगे तो पैसेज ने क्या कहा था, दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सिटीजन्स इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, अ रिलीजियस सेक्ट, अ डीटी और एनी जुरिस्टिक पर्सन. अब रिलीजियस सेक्ट के आगे पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज क्या यहां पर ऐड किया गया था? हाँ जी, जल्दी बताओ. रिलीजियस सेक्ट जब यहां पे रिलीजियस सेक्शन जब यहां पर मेंशन किया गया तो क्या उस सेक्ट के आगे पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी ऐड किया था? दैट ओनली इफ द रिलीजियस सेक्ट वांट्स टू परफॉर्म अ पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी देन ओनली दे विल बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 19. ऐसा कुछ उन्होंने कहा. तो फिर हम जब यहां पर अपने क्वेश्चन 11th में ऑप्शन ए को चूज करेंगे ना, ए क्या कह रहा है कि सिंस द बिजनेस एम्स टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, भाई वो किसी भी तरीके का ट्रेड करना चाहें वो कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट विच इज रिक्वायर्ड ओवर देयर. ठीक है, ये कोई कंडीशन प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड नहीं है. और प्राइमरी सेंट्रल आर्ग्यूमेंट अगर आप इस क्वेश्चन का देखोगे तो वो इस बेसिस पे नहीं है कि वो सेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एक्टिविटी करना चाह रहा है. प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या है यहां पर कंपनी का? कंपनी कहना चाह रही है कि बिकॉज द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, देयरफॉर दे डोंट हैव अ राइट टू प्रोफेशन और ट्रेड. बट ऐसा कुछ है क्या कि रिक्वायरमेंट होगी भाई रजिस्टर्ड कंपनी ही होनी चाहिए बस? एंड देयरफॉर स्ट्रेट अवे द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी, that since religious organization are included under Article 19, Q cannot be restricted in its operation. ठीक है? Clear? Everyone? Clear? चलिए, all right. Let's move to the next one. 12th question solve करो.
हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन 12th? Correct, correct. देखो, so the question was that a state-owned company served as the sole provider for railway services in India, effectively maintaining a monopoly over the sector. However, a private railway company referred to as K argued that this monopolistic control infringed upon its right under Article 19 of the Indian Constitution, which guarantees the freedom to practice any profession, trade, or business. Now, would the court recognize Company K's claim as valid, or would it uphold the existing monopoly for public interest? तो भाई state's monopoly was mentioned as a ground of reasonable restriction. तो फिर कंपनी के जो आर्ग्यू कर रही है वो तो सीधे सीधे करेक्ट नहीं है. And therefore the correct answer over here was option C, that the assertions made by the company K cannot be upheld as the constitution grants state authorities the power to operate such monopolies. ठीक है, चलिए, let's move to the next one. 13th क्वेश्चन सॉल्व करो. नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. पहले ऑप्शंस रीड कर लो या स्टेटमेंट्स रीड कर लो, देन विल मूव टू द ऑप्शंस. डन एवरीवन? डन? चलिए, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्या करेक्ट आंसर है भाई? हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर? एंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? स्टेटमेंट भी मेंशन करना, ठीक है? मेंशन द स्टेटमेंट एज वेल. देखो, so the question was that a technology firm named AIX intended to launch an AI-based legal consultation service and claimed its rights under Article 19 of the Indian Constitution, which allowed individuals to engage in any trade or profession. However, the Bar Council disagreed, stating that only certified legal professionals should give legal advice to avoid misinformation. Now, AIX responded by arguing that Bar Council's restriction imposed unreasonable limitation on its ability to operate comment. अब यहां पर जो correct answer था, that was option A. Now let's look which statement is correct. Now AIX cannot be restricted in this manner because its purpose is merely to give legal advice. देखो point क्या है कि state professional qualifications mention कर सकता है, and then in order to practice that kind of a profession, you are supposed to have that professional qualification. अब बार काउंसिल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल आपका सर्टिफाइड लीगल प्रोफेशनल होना जरूरी है, तभी आप लीगल एडवाइस दे सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सर्टिफाइड लीगल प्रोफेशनल नहीं बना सकते. एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर वाज दैट ओनली वन स्टेटमेंट वाज करेक्ट, व्हिच वाज स्टेटमेंट नंबर 2, that to promote public welfare the state may impose reasonable restrictions of qualifications as deemed necessary. ठीक है, क्लियर? करेक्ट, A2 was the correct answer over here. क्लियर है भाई एवरीवन? चलिए, ऑल राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज. तो अभी तक हमने जितने भी पैसेजेस सॉल्व करे दे वर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब जो हमारा नेक्स्ट हाफ है, जो हमें नेक्स्ट दो पैसेजेस सॉल्व करने हैं, दे आर प्राइमरली बेस्ड ऑन योर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसमें वन पैसेज इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ नेग्लिजेंस
and the other passage is based on the topic of VNFI. ठीक है, चलो तो start reading the passage, and once you are done with this slide, let me know in the chat box. ठीक है. Done? Everyone? Done? हो गया? चलो. So basic information of negligence was given in the passage, है ना, कि negligence है क्या, what are the important principles involved over there, what are the essentials, and what are the certain exceptions regarding the burden of proof. चलिए भाई, तो let's move to the questions. 14th question solve करो. हाँ जी, what's the correct answer? The correct answer is correct. देखो, question था, what are the key elements of negligence as a civil tort, and how does the principle of res ipsa loquitur come into play in certain negligence cases according to the passage? So the correct answer over here was option B was not correct, beta. ठीक है, B क्या कह रहा है, the key elements include duty of care, breach of duty and damage. यहां तक तो ऑप्शन बी करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन बी आगे क्या कह रहा है,
रेस इप्सा लॉकिटर इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन प्लेंटिफ फेल्स टू प्रूव नेग्लिजेंस। ऐसा थोड़ी ना है। रेस इप्सा लॉकिटर प्राइमरली उन केसेस में लगाया जाता है वेर इन ऑन द फेस ऑफ इट इज अपियरिंग दैट इट्स अ केस ऑफ नेग्लिजेंस, कि डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त वो फोर्सेप और उनकी सीजर वो एब्डोमेन में ही भूल गए। अब एब्डोमेन में बिना नेग्लिजेंस के क्या आप सर्जिकल इक्विपमेंट्स को भूल पाओगे? तो यहां पर इंजरी को देखकर ऑन द फेस ऑफ इट इट इज अपियरिंग कि इट इज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस ओनली। वहां पर प्लेंटिफ को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो बी वॉज नॉट द करेक्ट आंसर ओवर हेयर, रादर द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन ए, that the key elements include damage, duty of care, and breach of duty, and res ipsa loquitur is invoked when the circumstances suggest negligence without the need for further proof. ठीक है? So the correct answer was option A. चलिए भाई, let's move to the next one. 15th question solve करो. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? चलो देखो. So Rohit was on his way to work when he saw some disturbance on the streets. He went to see if everything was all right and discovered that his neighbor Shubham was lying on the street with blood on his lower body. He wanted to help him, but he had to leave immediately since an international client was waiting for him at the meeting. He did, however, call Shubham's family members and notified them of the accident before leaving. However, Shubham died before his family members could arrive, and his brother brought a negligence claim against Rohit, determine his legal responsibility in this particular situation. तो सबसे पहले ये देखो, whether he owed any duty of care towards Shubham or not. क्या रोहित की कोई ड्यूटी ऑफ केयर थी? एंड ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब एक लीगल ड्यूटी, राइट? क्योंकि मॉरल ड्यूटी उसकी हो सकती है कि वहां पर रुककर उसको शुभम का ध्यान रखना चाहिए था. But when we talk about duty of care in terms of negligence, the duty of care which is required over there is a legal duty. तो रोहित owed no legal duty towards शुभम, एंड तो फिर उसको आप क्या अकाउंटेबल करोगे? So the answer is no, and therefore correct answer over here was option D, that Rohit cannot be held accountable since the requisites of negligence were not met in this case. ठीक है? Clear? चलिए भाई, let's move to the next one. 16 क्वेश्चन सॉल्व करो. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्या करेक्ट आंसर है भाई? देखो, नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है?
when you had a duty of care and you committed the breach of duty of care. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर रखने की ज़रूरत नहीं है. उस सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर ट्रेड का पर्सन जो भी रीजनेबल केयर रखता, वो रीजनेबल केयर भी आपने नहीं रखी, इस वजह से आपको नेग्लिजेंस के लिए लायबल किया जाता है इफ सम डैमेज अकर्स बिकॉज ऑफ योर एक्ट. अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इट स्टेट्स दैट Gopal was a bus driver who was whose working hours were from 7 a.m. to 8 p.m. At 7:30 p.m. he was completing his last ride when the street lights on the road went out. Now, even though it was pitch dark, he tried to slow down immediately to avoid any kind of an accident. But at the last moment, he got a glance at a man in a bicycle, and in order to save it, he hit a tree branch. Now, several passengers as well as Gopal were injured due to collision with the tree. They filed a case against him seeking compensation and medical cost determined. भाई अब उस पोजीशन पे, उस सिचुएशन में वो जितनी भी रीजनेबल केयर रख सकता था वो उसने रखी थी ना. ही स्लोड डाउन, दैट शोज ही वाज टेकिंग रीजनेबल केयर. और जब रीजनेबल केयर रखी और उसके बाद भी मिसफॉर्च्यून हो जाए तो वहां पर आप नेग्लिजेंस के लिए उस पर्सन को लायबल नहीं कर सकते. Because this is not a situation wherein Gopal was driving the vehicle in a reckless manner. Rather, he was actually driving it in a very diligent manner, but still the misfortune took place or the accident took place. And therefore, the correct answer over here was option C, that Gopal is not obligated to pay compensation since he took reasonable precautions to avoid the accident. Okay? So the correct answer over here was option C. Chaliye bhai. Let's move to the next one. 17 solve karo. Now, this is a statement-based question. Options इसके next slide पे हैं, तो पहले यहाँ पर read कर लो. Then we'll move to the options. हाँ जी, डन. पढ़ लिया भाई सबने? डन. चलो, let's move to the options then. What's the correct answer? क्या करेक्ट आंसर है भाई? चलो देखो, क्वेश्चन क्या था हमारे पास. द क्वेश्चन वाज, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, दैट भुवन एस्पायर्ड टू बिकम अ डेंटिस्ट लाइक हिज फादर. हाउएवर, while studying medicine, he discovered that he had an interest in dermatology. However, because his father was a dentist, he also took elementary course in dentistry to assist his father. He did, however, pursue his dermatology degree and opened his own clinic. Now, on a Sunday night, his neighbor's child broke his teeth and was in excruciating pain. They came to see Bhuvan's father for treatment, but because he was out of town, Bhuvan operated upon him. Now, the next morning, when the child woke up, his pain had instead exaggerated and aggravated, and his parents realized that the medication that was administered to him was not appropriate. Now, determine whether or not child's parents have the legal right to sue Bhuvan. अब भुवन ने एक तो ऑपरेट कर दिया, दूसरी चीज भुवन ने जो मेडिकेशन प्रोवाइड की उस बच्चे को वो भी करेक्ट नहीं थी.
तो भुवन ने एज हैविंग अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द चाइल्ड, ठीक है, बिकॉज उसने अपना एलिमेंट्री तो वहां पर कोर्स किया था डेंटिस्ट्री का, सो ही हैड अ लीगल ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द चाइल्ड, बट क्या उसने उस लीगल ड्यूटी ऑफ केयर को प्रॉपरली फुलफिल किया? सो द आंसर इज नो. सो क्या भुवन लाइबल हो सकता है? तो ही कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल. तो कैनॉट वाले ऑप्शंस तो हटा दो. Now, Bhuvan can be held accountable since he was not competent to provide such a treatment. Answer is yes, because he operated upon him, जिसके लिए वो authorized नहीं था. And fourth statement is that Bhuvan may be held accountable for his negligence in administering the medication. So both the statements are correct over here, and therefore the correct answer was that two statements are correct. ठीक है? So the correct answer over here was option B, that is statement number 2 and statement number 4 are correct. ठीक है? चलिए भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. 18th क्वेश्चन सॉल्व करो. सॉल्व द 18th वन. बेटा ही टुक अ डिग्री इन डर्मेटोलॉजी, है ना, स्किन स्पेशलिस्ट था वो, दांतों का स्पेशलिस्ट नहीं था. देयरफॉर ही वाज नॉट ऑथराइज्ड टू गिव दैट काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट टू द चाइल्ड. ठीक है? हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 18th? The correct answer is correct, 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 correct. देखो. So Sujoy was an electrician who was appointed at the Western Glory apartment to serve the tenants. It had been 6 months since he was appointed, and the residents already had several complaints about his work. Now he frequently forgot to bring his equipment and spent hours fixing minor problems. Now, because he was only recently appointed, the apartment administration let it go. However, on one such occasion, he accidentally changed the wires, which would have resulted in a severe shock to the residents, but fortunately, the electricity was turned off and no harm was done. Now, Sujoy was sued by the apartment owner for negligence. Comment on his liability. क्या सुजॉय को यहाँ पर लाइबल किया जा सकता है? तो देर वॉज अ ड्यूटी ऑफ केयर, देर वॉज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर एज वेल, बट वो जो डैमेज की रिक्वायरमेंट है, क्या किसी को डैमेज हुआ उसके नेग्लिजेंस की वजह से? सो द आंसर इज नो. नो डैमेज टुक प्लेस ओवर देयर, है ना, डैमेज तो कुछ उसको हुआ नहीं. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए, दैट ही कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल because or since the requirements of negligence have not met in this case. ठीक है? Which would have resulted in a severe shock to the resident. Severe shock हुआ नहीं, लगा नहीं, would have resulted, मतलब damage हो नहीं पाया, and therefore this is not a clear cut case of negligence over there. ठीक है? So the correct answer was option A. चलिए भाई, so let's move to the next passage. ये हमारा last passage है अब. And this particular passage is based on the defense of VNFI, जिसको वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया या हम कंसेंट डिफेंस भी बुलाते हैं. ठीक है? सो दिस इज द लास्ट पैसेज. स्टार्ट रीडिंग द पैसेज गाइस. पैसेज रीड करना स्टार्ट करो.
डन एवरीवन? पढ़ लिया भाई? डन, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. डन, डन, पढ़ लिया सबने? चलो ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. 19th क्वेश्चन सॉल्व करो. सॉल्व द 19th वन. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? Correct, correct. So the question was, which two essential elements form the basis of defense known as voluntary non-fit injuria, and what is the burden of proof in cases where the defense is invoked according to the passage? So the correct answer over here was option A, that the two elements are plaintiff's knowledge of the risk and plaintiff's consent, and the burden of proof lies with the डिफेंडेंट. डिफेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोर्ट को ये प्रूव करना दैट द प्लेंटिफ हैड द नॉलेज ऑफ द रिस्क एज वेल एज प्लेंटिफ कंसेंटेड टू द रिस्क एज वेल. ठीक है सोनू बेटा, सी यहां पर इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि एक्सप्रेस कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. कंसेंट कैन बी इम्प्लाइड एज वेल. कंडक्ट के थ्रू भी आप कंसेंट इन्फर कर सकते हो. हमेशा एक्सप्रेस कंसेंट हो ये रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड देयरफॉर सी वाज नॉट द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए. चलिए भाई, let's move to the next one. डन, पढ़ लिया सबने? डन, चलो ऑल राइट. व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्या करेक्ट आंसर है भाई?
करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था। प्रणव एंड प्राची traveled to Australia for a business trip for 5 days. Fortunately, the deal was struck within the first 3 days only. So they decided to enjoy and visit all Australia's best attractions. Now they made the decision to try out Australia's most well-known activity, bungee jumping. They were asked to sign a contract agreeing to any risk involved with the activity and accepting that the company will not be held accountable for any injury caused. Unfortunately, Pranav suffered serious injuries since the parachute failed to open while in the air. Assess if a claim for damage is possible. देखो, अब यहाँ पर नेग्लिजेंस को लेकर कोई बात तो की नहीं गई थी पैसेज में, कि पैसेज में बोला गया हो कि भाई नेग्लिजेंस के केस में इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिचुएशन ऑफ वीएनएफआई. तो स्ट्रेट अवे हम अपने ऑप्शन स्टेटमेंट 2 को हटा सकते हैं. देन स्टेटमेंट 1 वाज प्रणव कैन नॉट सू फॉर डैमेजेस सिंस ही कंसेंटेड टू ऑल हार्म्स एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी. This is correct. Statement 3 was Pranav cannot seek compensation because he was aware of the dangers. This is also correct. And statement 4 was no damages may be sought because he willingly decided to bear any harm that may arise. तो ये भी correct था. And therefore the correct answer over here was option C, that only 3 statements are correct. That is statement number 1, statement number 3 and statement number 4. ठीक है, चलिए भाई, let's move to the next one. 21st क्वेश्चन सॉल्व करो. वापस आ जाओ, किधर वापस आ जाओ. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? करेक्ट. देखो, so Prem and Mahi traveled to Indonesia with other college friends on a vacation. During their 7-day excursion, they all went scuba diving on the second day. Because the majority of the students were terrified of water, they had to submit to an agreement stating that the company would not be held accountable for any natural death that occurred to any students during the activity. कि अगर किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से डेथ होती है, so the company will not be held responsible for the death of any student. Now, unfortunately, the scuba regulator that supplies the air to breathe underwater did not work and Mahi died as a result of lack of oxygen. Now, her parents launched a lawsuit against the company seeking damages and compensation. In response, the company asserted the defense of voluntary non-fit injuria because the consent had already been given ascertain. अब यहाँ पर क्या नेचुरल डेथ है? तो नेचुरल डेथ नहीं है. दे हैड अ फियर ऑफ वाटर, दे हैड अ फियर ऑफ वाटर. उस फियर की वजह से अगर किसी की डेथ होती तो दैट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डेथ. कि पानी में चले गए, आपको बड़ा फोबिया सा होने लगा, उसमें आपका हार्ट फेल हो जाए, दैट्स अ नेचुरल डेथ. बट यहाँ पर स्क्यूबा रेगुलेटर का जो ऑक्सीजन सप्लाई करता, उसने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जिसकी वजह से माही की डेथ हुई. तो दिस इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ नेचुरल डेथ. And therefore, the correct answer over here was option A, that the defense cannot be applied in this case since the death which was caused was not natural. Okay? So the correct answer was option A. Chali, let's move to the next one. Now, this is the last question of the day. Last question को solve करिए.
So we have C, we have A और C. देखो, what is more important? Mere knowledge of the risk associated with the activity is important, or it is the consent which comes along with the knowledge which is more important? Tell me. दोनों में से प्राइमरी चीज क्या होगी आपका VNFI अप्लाई करने के लिए? कि प्लेंटिफ के पास नॉलेज थी सिर्फ इसी बात से कि हम VNFI अप्लाई कर देंगे, या प्लेंटिफ एक्चुअली कंसेंटेड टू द हार्म, इस बात से हम VNFI को अप्लाई करेंगे? कंसेंट के बेसिस पे ना. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए एंड नॉट ऑप्शन सी. The question was, Bhumika went for laser treatment. She was already warned that her skin would burn and itch a lot after treatment and that any other skin problem may occur. Nonetheless, she insisted on doing it. Now her arms became swollen and itchy 3 weeks following the treatment. Now when she went to dermatologist, it was discovered that the laser therapy had damaged her skin, resulting in persisting burns and spots. Now determine if she has a legal right to sue the firm. So सिर्फ knowledge के basis पे हम नहीं कर सकते ना, right? Now she cannot sue the company since she was aware. तो awareness अपने आप में पूरी नहीं होती है VNFI के डिफेंस के लिए. So the correct answer over here was that she cannot sue the company since she had already agreed to the risks associated with the treatment. Clear? Everyone? Clear है भाई? Clear? चलिए, ऑल राइट. तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे. ठीक है, आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट जो हम स्टैटिक लॉ के प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे, ठीक, नेक्स्ट हम जो भी स्टैटिक लॉ के प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे, इन दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेशन वी विल हैव द पैसेजेस ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेशन में हम अपने क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के पैसेजेस को कर लेंगे. आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड टॉर्ट्स को प्राइमरली टारगेट किया था. ठीक, फिर उसके बाद तीसरा कोई हम प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे जिसमें हम चारों चीज़ों के पैसेजेस को सॉल्व करते हुए चलेंगे. ठीक है, बाकी इस पर्टिकुलर सेशन की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको लीगल बाय सॉमिल ग्रुप पे मिल जाएगी, उस पर जाके आप देख लीजिएगा. अभी सेशन के बाद मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा. तो पीडीएफ विल बी शेयर्ड विदाउट एनी आंसर, तो आंसर्स के बिना वो पीडीएफ होगी. तो उस पर्टिकुलर ग्रुप पर आप पीडीएफ देख लीजिएगा. बाकी अगर इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वंस द सेशन इज ओवर बता दीजिएगा. विल कम अप विद दैट सोल्यूशन एज वेल. रेस्ट आई विल सी यू मोस्ट प्रॉबेबली ऑन ट्यूसडे विद आवर नेक्स्ट लेजिस्लेशन लॉन्च. ठीक है, ठीक, चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो. बच्चे जो भी रिक्वायरमेंट है ना कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं या कोई ना कोई फैकल्टी उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपके पास सेशन लेकर आ जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होती हैं और भी चीज़ें होती हैं. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना. सो हूसोएवर विल बी फ्री विल टेक दैट पर्टिकुलर सेशन. ठीक है, चलिए, बाकी आज के लिए इतना ही. तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो, एंड आई सी यू सून. ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच बेटा. बाय बाय गाइस, बाय.